Assalamu alaikum. I welcome you all to the 14th episode of Facebook Live Sessions. Uh, we are in conversation with Mr. Sardar Mohsin Khan, who is an educationist, facilitator catering to O levels and A level students. And he has been providing his services for a long time in this field. And we are really lucky enough to have him. I would like to say to all the people who are watching this show, who are watching us today, that please join us. And this session is going to be very informative because there are going to be many things that we are going to cover. And, uh, and this has been a series of episodes in which we have discussed different topics, different problems that are being faced nowadays um, in our country or across the world because of this pandemic situation, because of this COVID-19. And there have been a lot of problems regarding education and regarding different sectors. So we welcome you on the board, Sardar Saab, Mohsin Saab. It's a pleasure to have you. Walaikum salam, Hassan. Thank you very much, first of all, for calling me over here. And I feel elated that you guys have given me this, sort of pedestal to come down and speak to. मैंने आपके पिछले programs कुछ follow करे हैं और माशाल्लाह से the job that you're doing over here in trying to communicate various aspects of our society, I believe it's commendable. Thank you. Or not just for sort of the clients or the customers or the people you're catering to, it's holistic. When it's on social media, it's holistic. Everyone benefits from it. Last session आपका शायद कुछ languages के ऊपर हुआ था, I believe. Foreign languages. Yes, sir. Yes. Yeah, I was impressed by it, and मैंने खुद plan out करना शुरू कर दिया कि what languages there that I can learn myself too. और दूसरी बात मैं आपको बताऊं इसके ऊपर कि when you continue to learn something new, okay, because I'm a teacher, it's coming from a teacher's mouth. I think all we talk about is learning. When you learn something new, your brain is kept alive, your brain is active, and that actually helps your physical health as well. Very true. Having said that, मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, अपने topics के बारे में बता दूं जो मैं discuss करने वाला हूं. We all know that what tough time we are going through. आप जानते हैं कि COVID took us by surprise, and there was not much time given to us to prepare for anything and anything at all. एक भगदड़ मच गई हर लिहाज. May it be our sort of rationing or how we'll survive the next few months or how long will it last for. तो इसी सब subject के affected areas में एक area हमारा आता है education. Yeah. And you all know, I know that how important is education for us at this point in time. It is one shot for every individual to kind of improve on their living standards individually, as a family, as a society, and lastly as a human race. ये हम पढ़ लिख कर ही एडवांसमेंट करके रिसर्च करके सीख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पे हम आज खड़े हुए हैं. अगर हम ये सब चीज़ें इग्नोर कर दें ड्यू टू वट एवर रीजन, चैलेंजेस पहले भी थे, चैलेंजेस अब भी हैं. ठीक है, कभी भी challenges खत्म नहीं होते. And there's a famous saying, as you must be knowing about it, that do not succumb to your challenge, rise up to your challenge. Don't give up to that. And if there's anything which is constant in life, if there's anything that is pertinent, will keep on coming every single time, that's the change. Yeah. और जीतता वही है, successful वही होता है जो change के साथ अपने आप को adapt करेगा. Adaptability is very important. Very true. Yeah. Exactly. ये चीज है that has to be communicated to the teachers, to the students, to the parents, to the communities, society as a whole. If we ignore this fact of adaptability और हम अपने एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे रहें कि यार ये होगा तो सिस्टम चलेगा, ये नहीं हुआ तो सिस्टम बैठ जाएगा, तो trust me, there is no way forward. We are in a block there. And sir, it's very important to come out of the comfort zone. We are always habituated to be in the comfort zone. We really want to be there. We don't want to move out. We just say that this is what is something that I'm comfortable with, and I'm going to be comfortable with this. So I'm not going to come out with that. So there is one thing that I want to mention in front of you, and then we will continue to you. So this whole claustrophobic situation, I must say, this pandemic situation, the atmosphere that is created all around. And if you look at the students, they're so demotivated. The morale is quite low, and students got no idea what to do, where to go, what not to do, how to deal with these kind of things that we are facing each and every single day. So, sir,
they got no idea what is going to happen in future, what is our future, and where are we right now. So I really want to see the whole situation through your lens, along with the ठीक है, audience ठीक who are है, listening ठीक to you. है, Yeah. ठीक है. Exactly, that's my job here to clarify a few things over here. जो स्टूडेंट्स के fears हैं किस तरह Yeah. combat करना है. देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले we need to understand what we are afraid of. जब तक आपको ये नहीं पता कि आगे आपके चैलेंज क्या है, आप उसके साथ you cannot battle with it. सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है कि when we went into COVID, our regular mechanism of imparting education was suspended. And Mm. more importantly, how long is it suspended for? ये कितने दिन तक इसी तरह रहेगा, इसके बारे में भी there is no clarity as such. आपके statements आते हैं, but then again, considering the fact जिस तरह हमारा एक system चल रहा है, वो change भी होते रहते हैं. अब situation ये है कि online education, classrooms that are now moved on to the web portals instead of physical classrooms, we are now in our own homes. तो उस सब चीज को हम किस तरह टैकल कर रहे हैं, इसके बड़े चैलेंजेस हैं. आप यकीन करें, इसके इतने चैलेंजेस हैं कि हमारी नॉर्मल क्लास, क्योंकि कन्वेंशनल लर्निंग है, हमने इसी तरीके से पढ़ा, हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं. हम Mm. क्लासरूम में बैठे, हमें टीचर ने पढ़ाया, हम उसी तरह पढ़ाते रहे. अब एकदम से एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया. Mm. Now this paradigm shift has left us baffled. So let's talk about it. Inshallah ताला by the end of this session, I believe बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले मैं बात करूंगा, where were we? ठीक है, जब हम पेंडेमिक से पहले हम क्या, कहाँ थे, हम क्या कर रहे थे, हमारे प्रोस क्या थे, कॉन्स क्या थे, और how did we run the show? Before this pandemic strike, हमारा बड़ा ही एक systematic conventional learning methodology था. उसमें there were certain advancements, of course, depending upon the vicinity and the school we were going. जब हम बात करते हैं ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, तो हमें होलिस्टिकली बात करनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ मेजर व्हाट यू कॉल दैट स्टैंडर्ड सेट. हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल और लोकल स्कूल्स और ओ लेवल स्कूल्स और ए लेवल कॉलेजेस, देन इंटर मैट्रिक, ये बड़ा एक डिफरेंस है हमारे पास. Mm. सैड बट इट इज देयर. अब उस पर्सपेक्टिव को रखते हुए मैं अगर बात करूं, तो हम बैठे हुए थे जी अपने, अगर मैं बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द अदर मीडियम एज वेल इंशाल्लाह ताला. बट मैं बात करता हूं, वी वर टीचिंग इन क्लासरूम्स ट्राइंग टू यूज दीज एज अ रिसोर्स मटेरियल. इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, हम इसको एज अ रिसोर्स मटेरियल ले रहे थे, नॉट द मेन स्ट्रीम मटेरियल. अब रिसोर्स मटेरियल के अंदर वी वर काइंड ऑफ इग्नोरिंग इट, लेट्स बी ऑनेस्ट. If I'm a teacher of physics and chemistry, I was teaching with my prior knowledge. जो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को revamp करके पढ़ा रहा था, मैं उसी चीज़ को utilize कर रहा था. इसमें hardly 10%, 15% incorporate करता था technology, ताकि Mm. बच्चों का interest बने या बच्चे उसको utilize कर सकें. So when this pandemic came across, as being a teacher myself, बहुत सारे ऐसे teachers हैं जो tech savvy बिल्कुल भी नहीं है. उनको टेक्नोलॉजी से एक तरह से कोई कनेक्शन नहीं है उनका. जब ये आया तो वो they were dumbfounded. How to do this change? How to bring about this change? ये एक पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर ऐसा हो रहा था. कुछ स्कूल्स हैं जो कि इस वक्त हम कह सकते हैं मार्केट लीड कर रहे हैं, who had already adapted a year or two before, again unknowing to the fact that there would be a pandemic or something, but उन्होंने टेक्नोलॉजी को ज़रा ज़्यादा अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया था, तो उनके लिए ये शिफ्ट इतना इम्पैक्टफुल नहीं हुआ. इम्पैक्ट हुआ, बट इट वाज considerably easier for them to transit. Mm. तो ये चीजें हैं. बात आ रही है इग्नोरेंस की, हमने पहले से प्रिपेयर नहीं कर रखा था. We did not know that what softwares to use. We did not know what communication mediums to use. आज हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने या 2.5 महीने के पीरियड में सीख के. तो ये चीज है. This is where we were. I guess talking about the habits we were into, I've already told you, हमने अपने आप को एक ब्लॉक में बना लिया था कि भाई मैं जो हूँ एक एक टीचर हूँ और मैं उस बुक से पढ़ाऊंगा, इस मास्टर से कराऊंगा, ये चीजें कराऊंगा, and I'm gonna communicate the material or medium to the student in that particular way. Very little importance was given. At least I'm not generalizing this thing. There are teachers who are using technology beforehand as well. उनको कम तकलीफ हुई है इस पूरे पेंडेमिक के अंदर. But then again, hardly 10% होंगे ऐसे लोग जो ये कर रहे होंगे. तो इसका ड्रॉबैक ये आया कि आपको टाइम लगा ट्रांसलेट करने. उस टाइम के अंदर बच्चे एक तरह से students are dependent on us. When they saw that teacher is not sort of coming up against this particular thing strongly, उन्होंने जो है वो उस चीज को
as a negative impact. You have no idea now what will we do. However, however, let me get back to where we are. Again, uh, we then adapted ourselves. जब ये चीज़ आ गई हमें पता लग गया स्कूल नहीं खुलने वाले ये मसला होगा आई गेस फेब 27 या फेब 28 से हमें इस चीज़ के अलार्म्स रेज होना शुरू हो गए थे मार्च में हमारा क्लोजर स्टार्ट हो गया था एंड बाय मार्च 14th or March 12th I guess majority of the schools have shifted to one or the other online mechanism. जब हम ऑनलाइन मैकेनिज्म पे गए तो हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया हमने जूम पे क्लासेस देना शुरू कर दी बच्चे आना शुरू हो गए एंड देन द रियल जर्नी बिगेन फ्रॉम देयर चैलेंजेस की भी और पॉजिटिव्स की भी हमने वहां से स्टार्ट किया उसको तो बात आती है टूल्स कौन सी यूज कर सकते हैं आज की तारीख में व्हाट टूल्स इज आर देयर दैट अ टीचर इज यूजिंग इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द मटेरियल वैसे तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं गाइडलाइंस अवेलेबल हैं मैं समझता हूँ आज की तारीख में अगर कोई टीचर ये समझता है कि यार उसको नहीं आता तो उसको सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट निकालने हैं sit on YouTube and then search for the relevant online teaching mechanism and go ahead with that. So this is what it is, sir, in terms of online learning. यहाँ तक हम पीछे से आप समझे बैकलॉग को लेकर इधर तक आ गए हैं. मेंटल चैलेंजेस की बात करें तो मेंटल चैलेंज ये होता है कि यार जब आप सुबह 8 बजे काम के लिए निकलते हैं तो you're mentally prepared for it. Okay, this and this hours you're going to spend at work and you're going to do this task. Right now, we are working from home. आप समझ रहे हैं बात? Students are working from home. They are learning from home. Constraints क्या हैं? They are at leisure. We are at leisure of our houses. इसका सबसे बड़ा challenge आता है timing yourself. Setting up a schedule. बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो सोशल मीडिया पे एक लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर रखा है इस वक्त के लिए हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्राइवेट पढ़ रहे हैं एक्स पढ़ रहे हैं वाई पढ़ रहे हैं these things are going on so सबसे बड़ा मसला आता है scheduling yourself. This is where schools play a vital role. School and administration sets up a routine for you, a check and balance for you as a teacher as well as a student. Me as a teacher, मैं आपको सीधी बात बताऊँ मैं privately भी पढ़ा रहा हूँ institution में पढ़ा रहा हूँ. When I go to teach a private student, there is always this advantage that in case I am stuck somewhere, I can reschedule myself. ठीक है? There is less what you call that explanation to be done. But when you're dealing with an institution, it's the other way around. आप खुद माशाल्लाह से एक work environment में आपको पता है कि in case अगर आप आज की meeting delay करते आज 3 बजे के बजाय आप बोलते हैं सर Mohsin you're going to start off at 5 o'clock. So there had to be certain repercussions for it. So that is why we need administration block. That is why we need schools for it. That is why we need institutes for it. Anyhow, ये चीजें हैं कुछ जो कि I have listed down. If you have any queries, please let me know. There is one thing that I want to mention. Yeah, there is one thing that I want to say. You talked about the fact that obviously we were living a life which I would say which had no problem. There was no problem we had. We were just going into the right direction. We were quite straight and we were just moving on, and everything was perfect. Everybody was enjoying. Everybody was having good time too. All of a sudden, things got reversed and things got changed, and then we got to know where we have arrived. This is what is something that we never expected. Something unexpected happened. Something happened that we never thought of. This is what happened exactly. Obviously repercussions are there, circumstances ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर we had to face a lot. So there was a change which was obviously required in the form of online classes, because you just spoke of online classes. तो मैं वहाँ आपसे पूछना चाह रहा था students के point of view से अगर देखें, so they always say, and I've been hearing them, they've been saying this कि भाई ये online classes जो हैं it should be stopped. Online classes should never be continued. Why? Because we are having problems in these kind of classes. We are having a huge problem in understanding the lectures and all, and everything is going on. So my question to you is that, sir, is that the solution, that no classes should be taken? Is that the solution, that if we are already in a problem, so we should not do anything? मतलब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ इसका जवाब मैं आपके सवाल में से देता हूँ. I get your question completely. And these are exactly the things I was talking about. कि social media के ऊपर एक pandemic बाहर मचा हुआ है और chaos social media में मचा हुआ है. ये है मसला. Everyone has taken freedom of speech as a fact that they can voice up their whims and wishes. अपनी जाती ख्वाहिशात जाहिर कर रहे हैं इस तरह करके. एक system होता है सर. एक system चलाने के लिए आपको you need to have
a mechanism. Hmm. आप आज बच्चे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आर स्ट्रेसफुल, ऑनलाइन क्लासेस आर दिस, ऑनलाइन क्लासेस आर यूजलेस. ठीक है, बंद कर दें. Hmm. हम कल से सिस्टम सारा वाइंड अप कर दें, स्कूल्स बंद कर दें, ऑनलाइन क्लास बंद कर दें. देन व्हाट? Then what? This is what? Yeah. पेंडेमिक कब खत्म होगा? Hmm. 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में? अब 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने बज़ाहिर तो it does not seem like a very big, tenure of time. But where would it put you, sir? अगर आप एक O level के स्टूडेंट हैं who's going into A levels, आपका ऑलरेडी पीछे बैकलॉग जो है आपने देखा कि how you have been, sort of how you were dealt with in terms of your grades and how you were dealt with in terms of your, results. अब आप अगर A2 में जा रहे हैं, तो अब अगर आप 3 महीने लेट स्टार्ट करेंगे और उन 3 महीने आपने नहीं पढ़ा और नेक्स्ट सेशन आपका दोबारा जुलाई में बैठता है या जून मई में बैठता है, तो do you think you can prepare within the next 6 months? Hmm. Do you think you would have enough time to finish the curriculum, or are you going to delay that? You are going to end up losing out precious time of your life in the first place. ठीक है? आप consider yourself lucky over here. We as teachers consider ourselves lucky over here. There is a mechanism to continue classes. ठीक है? हमें ये bonus time मिल गया है. ये जो हमें ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्म में मिल गया है, समझें दिस इज an advantage for us that our curriculum is being completed that way. Hmm. उसके ड्रॉबैक, उसके शॉर्टफॉल्स होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके डिस्ट्रैक्शन हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो देखिए वी नीड टू लर्न टू टैकल टू दिस. Yeah. इस पूरे पेंडेमिक का अगर आप एक जस्ट निकालें ना ऐसा किसी भी फील्ड के अंदर, तो ये पेंडेमिक हमें सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहा है और कुछ नहीं. Hmm. Responsibility of spending money, responsibility of keeping ourselves safe, keeping our environment safe, keeping others safe, responsibility of how to manage things in an effective way, sustainable way. अब sustenance यही कहती है that you need to learn, you need to prepare yourself. आज बुरा है, कल इंशाल्लाह दोबारा नॉर्मल होंगी चीजें. जब कल नॉर्मल होंगी चीजें तो इस एक बुरे दिन की वजह से बैकलॉग नहीं आना चाहिए. बैकलॉग इज गोइंग टू put you in a very negative situation. तो मेरा उन सारे स्टूडेंट्स को जो ये समझते हैं कि यार ये चीजें should shut down, my only answer to them is that trust you me, this is for your advantage, you take this time out to study. और मैं कह रहा हूँ आपको, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को day in day out, that this is a bit more effective mechanism because आपके पास क्लास की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके पास बराबर में आपका दोस्त नहीं बैठा हुआ जो आपको he's gonna pin you and he's gonna bother you or Hmm. distract you. You are individually glued onto your screen and you are learning from that individually from a teacher. Sir, This is very very well said. ये जो आपने point जो mention किया है ना कि it is teaching us a lot. It is teaching us how to spend money. It is teaching yeah, us how to make the most of the time, and it is yeah, teaching us कि how to adjust your life, how to be adaptable. It is teaching us at the same time a lot, even though we are facing this problem in a yeah. way like we are totally worried. We are really into some kind of a depression, I must say. सर आई वुड से कि जैसे आपने ये बात कही ऑनलाइन के हवाले से, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, सर ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर एंड online I think there have been a lot of classes, there have been a lot of things in past even Yeah, before pandemic that yeah, many countries have been following when it comes to yeah. online classes. Sir, I would like True. you to put light on that too. So satellite learning or distance learning program were introduced way before than we were, in this Exactly. pandemic. आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आपके अपने मुल्क में वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है, Hmm. वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैज बीन इम्पार्टिंग नॉलेज फॉर गॉड नोज मोर देन अ डेकेड, आई एम श्योर. ठीक है, और उसका मैकेनिज्म यही होता है दैट यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड देयर, फिर आपके ऑनलाइन सेशंस होते हैं, दे गिव यू मटेरियल, यू आर एग्जामिन्ड सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन. इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, एसीसी का एग्जाम हो गया, Hmm. आपका Online. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स होता है एक फ्रॉम यूएसए, उसका एग्जाम हो गया. ये ज्यादातर एग्जाम जो फॉरेन सर्टिफिकेशन है ये ऑनलाइन होती है. they give you an online invite to a particular exam room on a portal. उनके अपने surveillance mechanisms होते हैं. You sit Hmm. on that, you take the exam. So it's not like we are completely going into a 180 degree shift. ऐसा नहीं है. ये systems पहले से implemented थे. बाहर की foreign degrees were being offered over here through distance learning programs. तो कहने का मकसद ये है कि it was there. It was ये था तभी तो हमारे पास tools मौजूद हैं सर. Hmm. अगर ऑनलाइन सिस्टम पहले अवेलेबल ही नहीं होता तो टूल्स कहाँ से होते? टूल्स स्क्रैच से स्टार्ट करने पड़ते. बिल्कुल. आप समझ रहे बात को? सर जो आई टूल्स कंप्लीटली
जी सर, कंटिन्यू करें आप प्लीज। तो मकसद कहने का ये है, again, ये effectively was implemented, but at a different level, at a different what you say clientele. बहुत ही selected clientele थी जो on distance learning पे जाती थी, जो मुश्किल से टाइम निकालते थे यूनिवर्सिटीज जाने का या इंस्टीट्यूट जाने का, तो वो घर बैठ के पढ़ सकते। अब यहाँ पे ये हो गया, this has become an overall thing. Again, this is a temporary shift, by the way. Let me emphasize on that. I am not saying that this is the permanent way forward, inshallah ta'ala. As soon as we get back on track, we will be back onto our usual routine, but even more prepared. Even more prepared. अब हमारे पास, हमें पता है कि हम ऑनलाइन रिसोर्सेज को साथ लेके चलें। आप समझ रहे हैं इस बात को? जी Anyhow, that was about distance learning, etc. अभी आपने सुना होगा पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव किया था when this pandemic started off, and they started off airing a channel on which they set up times for each grade level. जैसे जी सुबह 8 से 9 पर्टिकुलर ग्रेड लेवल 9 से 10 ये वो चैनल चला रहे थे। अब वो चैनल चलाने से भी क्या हुआ कि जी एजुकेशन ज्यादा रीच तक पहुंचेगा, इट्स गोना रीच मोर पीपल नाउ। उसकी आपने ऑडियंस बढ़ा दी है, ठीक है। अब आप उसको एज अ मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम नहीं ले सकते, आप उसको एज अ मेन स्ट्रीम लर्निंग मैकेनिज्म नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें आपका शॉर्टफॉल आएगा ऑन असेसमेंट। मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ आपके, जिसमें मैं बात कर रहा था कि एजुकेशन सिस्टम इस वक्त कितना जरूरी है, ऑनलाइन एजुकेशन कितना जरूरी है, स्कूल्स कितने जरूरी है, इंस्टीट्यूट्स कितने जरूरी है। सर, वहाँ आने से असेसमेंट, पहले एक सवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप उसको भी आंसर जी कर दिएगा। जी सर, जी ये एक बड़ा ये समझ लें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आई एम आस्किंग यू। गो अहेड। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम बोथ साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, it comes from the institute इदारे की तरफ से भी, it comes from the side of teachers too, and it comes from the side of students too. Definitely, it's kind of a problem which was unusual that came in. Then we went towards the alternatives. Okay, we have come there. ठीक है, not all things are perfect, right? There is always some kind of a space to be better when it comes to system or online education or anything. Disconnectivities are there, connectivity issues are there. Obvious students are not understanding like the way they should be understanding. It's fine, totally understood. But sir, मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट की भी अपनी जिम्मेदारी है ना कि जब वो पढ़ रहा है, when he is in the class, whether it is the online class or any of the class, especially अगर अभी की बात करूं तो ऑनलाइन क्लास का ही कहूंगा मैं, अभी जो चल रहा है टाइम। तो डोंट यू थिंक कि आपको भी उसके अंदर कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं डालनी चाहिए स्टूडेंट्स को? यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि वो मैं समझ नाम आ रहे हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो उसके ऊपर कुछ और नाम लिख दिया गया है जी। और शोर होता था तो वो कोई कनेक्टिविटी जानबूझ के कर दी गई है। मैं स्कूल्स के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने स्कूल्स के स्टूडेंट्स को देखा है कि वहां तो इतना ज्यादा, जैसे कहते हैं, मिस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की तरफ से मैंने देखी है कि वो कोई आवाजें निकाल रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई जो है कुछ कह रहा है, कोई जनाब वो कुछ और चल रहा है। तो ये भी हम हमारे अनफॉर्चुनेटली सुनने में आया है। दिस हैज आल्सो बीन ऐसा अ प्रॉब्लम। ये बड़ी एक मैंने लाइटर नोट में कही है, लेकिन बात बहुत हकीकत में मबनी है। मैं, आप देखिए, ये मेरे आगे ये उसमें था, एसओपीज में था, जो मैं बात करने वाला था, चैलेंजेस वगैरह के अंदर ये आ रहा था बात। आप अच्छा हुआ आपने यहीं पे कर दी। लोग ऐसे, द थिंग इज दैट, पहली बात तो ये है कि मैं इसका अगर पूरा जवाब देने बैठूंगा तो इट वुड लीड टू अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन, नंबर वन। नंबर टू, माइट लीड टू सर्टेन कंट्रोवर्सीज एज वेल, एंड एज आई सेड, आई एम गोना अवॉइड कंट्रोवर्सी। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये बड़े रियलिस्टिक चैलेंजेस हैं, और ये बड़े एक्सपीरियंस होकर यहाँ तक आए हैं। आपने भी कहीं ना कहीं देखा है, सुना है, चीजें हुई हैं, देयर इज नो डिनायल टू इट। लेकिन दो चीजें बोलूंगा। नंबर वन, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग, आपकी लर्निंग का बड़ा एक पार्ट है। ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतने कंट्रोल्स दिए हैं कि यू कैन रिस्ट्रिक्ट दीज थिंग्स। या आप बच्चे को क्लास में एंटर होने से पहले यू कैन म्यूट ऑल ऑफ देम, एंड देन you can unmute an individual you want to speak to. You can take away the right for them to connect themselves and speak up themselves. You have the right to allow people to communicate. जब तक बच्चे ये ना समझें कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना बिहेवियर थोड़ा सा कंट्रोल करें, कंटेन करें, ठीक है। हम यहाँ पे we're not sitting here for fun. We're not sitting away for here for to sort of spend our time, waste our time. We are here to learn. जब तक वो ये नहीं समझते कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम किसी बच्चे से सवाल करते हैं तो वी अनम्यूट देम, वी स्पीक टू देम, वी टेक द आंसर्स एंड वी गो बैक टू आवर
सेम रूटीन, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चा वहां है या नहीं है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे ने क्लास ज्वाइन करी, उसकी डीपी लगी हुई है, उसका माइक म्यूट है, एंड ही इज नॉट देयर और प्रॉब्ली हैविंग लंच और व्हाटएवर। फॉर दैट वी नीड टू मेक श्योर द स्टूडेंट कीप्स द कैमरा ऑन, राइट, द कैमरा इज ऑन। तीसरी चीज आती है आपके, हम चैट रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दे आर बीइंग यूज्ड, दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स। अगेन मैं समझता हूँ ये फिर भी ज्यादती है। बच्चे को हम we are dealing with humans, we're not dealing with machines कि we completely control them and confine them. मैं अपने बच्चों से हमेशा यही बोलता हूँ, या be responsible, you need to be responsible of your actions. तीसरी और आखिरी चीज आती है रिकॉर्डिंग। These recordings are highly confidential. First of all, let me tell you, they are not publicly introduced or anything, but we have the recording option to keep a log of who has done what and where. We have that much of control over the system. ये वो चीज नहीं हो रही है कि जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कौन क्या करके चलेगा। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, हाँ, टूल का सही इस्तेमाल इम्पार्ट करना ये जरूरी है। there are various tutorials available to fetch onto the communication and the utility of these tools. Right. I hope that this answers your question. लेकिन इसमें मेरा बड़ा मेजर फर्क आता है। मैं आपको बताऊं कि बिफोर दिस सेशन मैं अपनी जब राइकी कर रहा था that what to talk and what not to talk, मेरे आगे एक बड़ा legitimate सवाल आया from one of the persons I know, and he said that कि यार you are teaching to a completely different class of students. उनके पास लैपटॉप होना मसला नहीं है, फोन होना मसला नहीं है, इंटरनेट होना मसला नहीं है, उनके पास ये सारी चीजें एज अ बेसिक things available है. Schools which you are teaching in don't have that issue. Schools have taken very big initiatives. They have distributed laptops to teachers who didn't have them. उनके पार्ट पे ये हुआ. They have purchased softwares that were sort of that are being used over here for imparting knowledge. School ने अपना part play करा है, students के पास चीजें. What about the schools and colleges and students who unfortunately do not fall into this category? How are they supposed to learn and continue with this? उनके पास ये किस तरीके से चल रहा है, उनके पास how are things running it? ये बड़ा एक परेशान कुन सी चीज थी जिसका to be honest मैं इसका प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि इसमें क्या करें, इसमें हम एनजीओस को इंक्लूड करें, इसमें हम चैरिटी को इंक्लूड करें, या इसमें हम गवर्नमेंट को बोलें कि भाई द गवर्नमेंट शुड टेक एन इनिशिएटिव्स. Mostly government schools unfortunately would fall into this category as well. So ये shortfalls उस जगह पे ज्यादा impactful हैं, वहाँ पे education जरा ज्यादा affected है compared to the cliche or the certain proof that we are catering to. Right. I hope you understand that. तो वहाँ पे challenges जरा ज्यादा बढ़ जाते हैं, और मेरे ख्याल में इसी वजह से initiative like having a satellite channel in order to impart knowledge works more over there. Right? Anyway, डिस्टेंस लर्निंग के मैंने आपसे थोड़ा बहुत टूल्स की बात की थी ऑनलाइन की. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग के अंदर, जो कि आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स करते रहे हैं जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं. वी शुड आल्सो सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट सम सॉर्ट ऑफ पैकेट्स, स्टडी पैकेट्स जैसे होते हैं. इससे क्या होता है, इससे चीज़ फॉर्मलाइज होती है. जब आप बच्चे के पास कोई चीज़ लेके जाते हैं कि यार ये आपका एक पैकेट आया है, या ये आपका एक कोरियर आया है फ्रॉम फलाना इंस्टीट्यूशन, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन, तो child might feel a little more restricted and constrained कि नहीं भाई the system is intact, I'm getting thing physically, I'm getting thing online, so I'm still a part of that whole learning process, rather than just waking up and just joining in the class there and then as it is. तो ये चीज़ है. चैलेंजेस की बात हम कर चुके हैं इसके ऊपर कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या आपके फिजिकल एसेट्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, या स्टूडेंट्स बिहेवियर, टीचर्स बिहेवियर एक्सेट्रा. So I think that has covered. If you have any questions or any comments that are coming in, unfortunately I can't see them over here on my laptop right now. If the people are questioning anything, so I can ask. I definitely sir would be reading with the passage of time. If there is any comment, if there is any question, I will read it to you, sir. Sure. Okay. अच्छा, मैं तीसरी बात कर रहा था ट्रांसपेरेंसी के ऊपर. जी. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी ये थी, मेरा मकसद कहने का ये था कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को. ठीक है. बच्चा इंफॉर्मेशन कहीं से भी गैदर कर सकता है. हाउ वुड आई नो दैट हैज बीन रीच्ड और टू दिस चाइल्ड और इट हैज बीन रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड?
How do I sort of keep a track that whatever has been taught has been received by a child? For that we have our own testing mechanisms. यहाँ पे आपका सिस्टम इंटीग्रेट करेगा लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को. देखिए मैं फिर बोलूंगा, एक एक चीज बंद होती है 50 दरवाजे खुलते हैं. ऐसे सुनिएगा मेरी बात. कोविड की वजह से अगर सिस्टम कहीं पर रुका है तो बहुत सारे सिस्टम्स खुले भी हैं. जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक वो डोमेन था जो ज्यादातर अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था एक्सेप्ट फॉर सिलेक्टेड. लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हम इग्नोर करते रहते, हम फिजिकल रिपोर्ट्स और फिजिकल पेपर वर्क पे ज्यादा रिलाई करते रहते rather than having system integrated over there. अब यहाँ पे आप देखिए हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में लोकल LMS बनाना शुरू कर. आप समझ रहे हैं, लोकल जब LMS बनेंगे वो आपके एप्स पे आएंगे, ऐप स्टोर्स पर आएंगे, वो बिकेंगे, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो रहा है. ठीक है, प्लस इसकी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी तो ट्रेनर्स की एक पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप हो रहा है. मोर ओवर इफ यू टॉक अबाउट दैट, LMS से हमें ये होगा कि हम जब जो चीज़ बच्चों से रिसीव कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, वी कैन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गूगल स्वीट की. ठीक है, गूगल क्लासरूम, गूगल स्वीट इज वन ऑफ द LMS जो कि बहुत रेडली अवेलेबल है गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड आई थिंक इट्स अनपेड फॉर एज वेल. उसमें होता है कि जो व्हाटएवर असाइनमेंट्स यू हैव गिवन टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो वहाँ पे असाइनमेंट्स आपको सबमिट करता है एंड यू चेक इट देयर एंड देन एंड द रिपोर्ट इज अपलोडेड provided that assignment has been uploaded over there. Similarly, there's a quick school, there's another canvas. ये चीजें हैं, tools हैं जो कि available हैं. हमें चाहिए कि हम इन tools को सीखें, इनकी awareness लेकर आएं. And this is why I'm here as well, to communicate this to my guild, to the teaching, sort of fraternity, that it's about time we start utilizing all these softwares. अपने घर में बैठ के हम जो हैं वो इस चीज को review करें कि what is the best way we can bring forth education in these times too. Agreed. Anyway, तो अब मेरे भाई ये वे फॉरवर्ड है, यही चीज है. मैं कहता हूँ कोविड खत्म भी हो जाएगा, हम दोबारा अपनी क्लासरूम में चले जाएंगे. तो इस पूरे सिस्टम में हमने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है कि we need to have an alternative resource available for learning. बहुत दफा हमने देखा जी बच्चा is home ridden, he's sick, he can't attend school for 1 week. ये मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ. अब वो एक हफ्ते का क्लास वेस्ट करेगा. अब हमें पता है कि उस क्लास में अगर हम एक रिकॉर्डेड डिवाइस लगा दें या एक ऑनलाइन लैपटॉप रखते हैं तो while the class is being conducted, that thing can be imparted to the student there and then. This was available there as well, but now we can incorporate much better. So there is one question that I want to ask here. You spoke about O level and A level students. So, sir, what are the challenges they are facing in terms of examination? Would you like to tell us कि when it is going to be, या उसके अंदर क्या delay आया है, या what is the real update about that zone of O levels and A level students? उसके बारे में जरा जानना चाह रहा हूँ. देखिए वो सारी जो O levels और A levels की जो एग्जामिनेशन कैम्ब्रिज के थे, उसकी जितनी भी एक्टिविटी हुई है वो इस तरीके से हुई है कि first they said that the exams will be conducted, we all know that, but then when the situation got worse, they cancelled all the papers and then they sort of went for a predicted grade mechanism. ठीक है, अब वो उनका एक set pattern है on which they're going to work on based on statistical data whatever they have, and they're going to generate the results for the students. इसकी detailing क्या है या इसके mechanisms क्या हैं, unfortunately मैं public forum पे can't discuss those, but this is what it is. ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर दो इवन, क्योंकि ये सारा गेम उनके अपने हाथ में है. ये सब जैसे हमारी लोकल गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि जी हम फलाना ग्रेड देके बच्चों को विल पुट देम. विद देम देयर इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क बिकॉज़ द रियल डिसाइसिव पावर लाइज इन देयर हैंड्स. हाउएवर जो हमारे कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, what they're going to do is that they're going to continue with their normal routine. If a child particularly could not attempt a paper in this session, they will attempt them in October-November session. ठीक है, हमारे 2 सेशंस होते हैं नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर एंड देन मई एंड जून के अंदर. तो दे गोना डू इट दैट वे. तो हमें कंसिडरेबल टाइम निकालना पड़ेगा उस चीज के लिए ड्यूरिंग आवर ए लेवल सेशंस या ड्यूरिंग आवर अगर ग्रेड 11 का स्टूडेंट है तो वो ग्रेड 11 के करिकुलम के साथ साथ बीच में बैठ के पेपर देगा अपने अक्षर इस्लाम में. या अगर ए लेवल का स्टूडेंट है एएस का, तो while studying for AS he's going to appear in his O level subjects in October November, and this is how A2 students are going to work too. Main problem सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ जो कि पब्लिक फोरम पे अवेलेबल भी है बहुत सारी जगहों पे, वो ये है जो A2 का स्टूडेंट है जिसको यूनिवर्सिटी जाना था
उसके लिए मेन कंस्ट्रेंट आ सकता है कि उसका रिजल्ट है नहीं है, उसका गैप ईयर तो नहीं आ जाएगा। मैं तो समझता हूँ टू बी ऑनेस्ट, गैप ईयर अगर बच्चा लेता है या स्ट्रेटेजिकली प्लान करे तो ही कैन बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ व्हाट ही नीड्स टू। ठीक है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज ने आई गेस, आपने शायद सुना हो नहीं सुना, एनईडी ने आई गेस कुछ एग्जामिनेशन जो उनका होता है एडमिशन टेस्ट, उसकी वेटेज बढ़ा दिया rather than the previous grades. So Right. admissions will be taken based on the admission test and all. I'm not sure about the what you call the 100% authenticity of this report, but this is what went through my ears. The majority of the universities are relying on admission test procedures now to bring the students to them. So ये चीजें हैं, but whatever the case is, Essen, मुझे नहीं पता Indus University, what are you guys doing? So we are definitely providing online education, and the online classes are there, and through with the help of Zoom, and we are providing trainings to students. We are trying our level best to make the most of it. And besides that, we are also giving these opportunities if anybody wants to do online courses. So Okay. we have really worked on that too. Okay, if they want to do that, like a couple of weeks ago, and this was a project that we were working on in order to Okay. provide the online training links through which they can connect and do the courses. But sir, Okay. there is one thing that I want to ask. One question can I put in front of Yeah, you? yeah, yeah. Go ahead. That is कि ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन और ये तमाम चीज़ें मसाइल हमने एजुकेशन से रिलेटेड देखे और इस पेंडेमिक में, बट देर इज़ वन मोर चैलेंज सर, एंड दैट इज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जी. Why am I saying this? Because there are many students and they are listening to you, and there are many students who are working and professionally they are working, and they have been obviously going to their offices, and now they have this depression. Okay, what is going to be my opportunity? Then there is one more thing कि यार मैं तो इस साल graduate हो रहा था. I was going to be graduated this year. So this is kind of something very frustrating कि पता नहीं क्या होगा. So that also is something that puts you into stress. तो एक वो चीज़ भी है, और फिर ये कि एम्प्लॉयमेंट को लेके काफ़ी टेंशन एंड ऑल. सर, हाउ वुड यू एड्रेस दैट? हाउ वुड यू पुट बिल्कुल लाइट ऑन? बिल्कुल 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 सही, ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं विच वी कैन सी इन फ्रंट, जो ग्रेजुएशन ईयर में होंगे, अपने निकलने वाले होंगे, उनके लिए एक मेजर कैप बन रहा है. प्लस जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वहां से भी आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर लीनिंग ऑफ, इवन दो द गवर्नमेंट हैज पुट स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स अगेंस्ट दिस, बट इट इज हैपनिंग. एंड अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की आजकल डिमांड्स आ रही हैं फ्रॉम दी सोशल बॉडीज दैट आर प्रेजेंट, अनफॉर्चुनेटली वो तो ये चाह रहे हैं कि जी टीचर्स भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएं कि जी. अनएम्प्लॉयमेंट के. बाकी ये है कि देखें, सबसे पहली चीज, रिश्ते में ज़्यादा अल्लाह की है, नोबडी हैज कंट्रोल ओवर इट. दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगेन राइज अप टू द चैलेंज. मेरा सबसे बड़ा जो हिंट जा रहा है उन लोगों के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स, यू आर फ्रेश माइंड्स, यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रेंट्स. आप हमारी तरह वो नहीं है कि जो एक ब्लॉक के अंदर फंस चुके हैं कि जी यही काम कर रहे हैं और यही कर रहे हैं. आपके पास the chances of grooming yourself and growing yourself are way larger. और इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन मटेरियल, यूट्यूबिंग, these things are sustaining these days. These things are sustaining these days. मुझे जैसा बंदा जो 12 साल से क्लास में खड़े होकर लेक्चर्स देता आ रहा है, I'm considering options of turning myself or starting a YouTube channel as an alternative source there. तो ये चीजें हैं. These are all realistic things. So don't depress yourself, don't pull yourself down, don't lower your shoulders right now. यार यही तो वो टाइम है जहाँ पे आपका पढ़ा लिखा होना ही आपके काम आएगा. आपने इतने साल यूनिवर्सिटी में लगाए हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो सही इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रही हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स योर यूनिवर्सिटी. जब सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली आपके पास अवेलेबल हैं, जस्ट ट्राई टू सॉर्ट ऑफ एक्सपैंड योर विजन. डोंट से अगर आप इंजीनियर हैं और आपका मकसद ये था कि जी मैं किसी इंजीनियरिंग फर्म में जाऊंगा और वहां पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम हो गए हैं, no issues. Yeah, we are living in the 21st century, and over here right now, I think fields have merged. I have seen in my own family that engineers have ended up becoming associate directors and directors, or managing stuff and all. और ये सारी फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा इन्फ्लक्स आपके ऑनलाइन फील्ड्स का. सो दैट्स माय वर्ड फॉर देम. आप तो बात करें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की, मैं तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो फारिग बैठे हैं, उनके लिए भी recommend करूँगा कि learn some new skill during this time. Yeah. Utilize this time to learn something that you couldn't do before.
मेरे लिए ऑनलाइन आके स्क्रीन के आगे आके बैठना, पढ़ाना, ये करना या अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाना वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी. But then again, when this took place and I had time to do it, I did take an opportunity to plunge into it. And Alhamdulillah, to an extent, I believe that it's going fine. बाकी तो मेरे students ही बताएंगे if they are finding it useful or not. Anyhow, तो ये चीज़ है. और जो लोग यहाँ पे उस चीज़ का शिकार हैं कि जो they are being, मैं कहता हूँ कि मेजर लेवल पे तो नहीं हो रहा, ये ज़्यादा लेबर लेवल पे हो रहा है अनफॉर्चुनेटली. लेकिन उनके लिए ये है कि जी अल्लाह बेहतरी करे, आप भी ऑल्टरनेट सोर्स पे जाएं. और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, नौकरी आप सब करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन तिजारत दीनी तौर पे हर लिहाज से एक ऑप्शन रखें. ऑलवेज ये एजुकेशन से हटके और हर चीज़ से हटके एक बात कर रहा हूँ मैं आपको. अल्लाह ताला ने एक अलग बरकत रखी है इन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग कैन बी ऑफ एनीथिंग. Don't shy off in trading. Don't shy off of businesses. Try your luck. कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह आप क्लिक करेंगे and hopefully it will turn beneficial for you. बहुत सारी जगहों पे मैंने लोगों को देखा है. सन बात मैं फिर बोल रहा हूँ, वो टॉपिक बिल्कुल चेंज हो रहा है इस वक्त, लेकिन आई वुड लाइक टू डू दिस. ऐसे मैं आपको बताऊं, मैंने लोगों को देखा है जो 15-15 साल 20-20 साल नौकरियां कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, और उन 15-20 साल कंपनी का जब वो छोड़ते हैं तो क्या मिलता है. मैं एक नॉमिनल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं हाई एंड लेवल की बात नहीं कर रहा, पर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा. तो वो 20 साल तक वहां पे दे आर ब्लॉक्ड. मैं आपको एग्जांपल ऐसी दे सकता हूँ यहाँ बैठ के, जहाँ पे लोगों को व्हेन दे लेफ्ट देयर जॉब्स, टेक्निकली वो डिप्रेस थे कि यार मेरी नौकरी छूट गई, अब मैं किस तरह चलाऊंगा. लेकिन जब उनके पास हाथ में टाइम आया, दे ट्राइड देयर लक इन अदर बिजनेसेस. उन्होंने कोई दुकान डाली, किसी ने कोई ट्रेड कर लिया, किसी ने बहुत सारी चीजें हैं जो लोअर लेवल पे आप कर सकते हैं. Examples देने पर आएंगे तो this vast thing, and they are far more successful. So please don't depress yourself. Use this time, learn a skill. मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब तक आप सीखते रहेंगे, तब तक आपका दिमाग एक्टिवेट रहेगा, तब तक आप फिजिकली एक्टिवेट रहेंगे, and hopefully you will have a good, long, healthy and a wealthy life. So there is one thing that I want to add in your conversation. Totally agreed on this point. That you're not only supposed to do your job, you're also supposed to try something else too. Like when you're talking about business and other stuff, so you should go towards some investment, not very big investment, but Exactly. it is always about the idea. And I Exactly. also want to say that there are many people who do job, who are like professionals, who job कर रहे होते हैं. But होता ये कि if they completely leave the job and they come towards business, so obviously sometimes it gets very difficult for you. Not sometimes, most of the time it gets very difficult for you to make both ends meet. क्योंकि होता ये है कि आपका गुजारा जॉब पे हो रहा है, आप अचानक से जब वो बिजनेस में आ गए, तो obviously you are the kind of a person who is habituated to have his bank credited with by the certain amount. But in business it does not happen. और पेंडेमिक सिचुएशन तो आई है, तो उसके अंदर तो हालात मुख्तलिफ हुए. लेकिन अगर इससे हटके भी बात करें तो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. तो मैं ये कहता हूँ कि आप फिर भी जॉब तो कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन साइड में जरूर करें, चाहे वो छोटा सा हो, लेकिन आप करें, उसको टाइम दें. और मुझसे बड़ी अच्छी बात कही थी, मेरे ख्याल है सलमान अमीन साहब को हमने बुलाया था, और वो भी सीडर कॉलेज में होते हैं, एंड ही मेंशन अ लॉट ऑफ थिंग्स. उनका एक पॉइंट बड़ा वेल सेट था, और वो मैंने बड़ा उसको गौर से सुना कि आपने जो करना है आप कीजिए, बट 7 बजे के बाद जो है, यानी कि 9 to 5 अगर आप काम कर रहे हैं, उसके बाद वाला टाइम तो जी आपका है. In that period of time you can do what you want to do. Exactly. Try the new things, bring the idea and try to follow that. हाँ, ये भी होता है सर कि जाहिर है फेलियर होता है, you have the failures, you have the losses, but keep trying. वही वाली आपकी बात कि sometimes या कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर आता है कि जब कोई भी चीज clicked हो गई. Once it is clicked, then you're not over there where you are at a better position. तो totally agreed with you. सर एक पॉइंट आपके सामने जरूर रखूंगा, एक सवाल. हम जो ये कहते थे ना कि वो टाइम नहीं है हमारे पास, और अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सवाल मैंने पता नहीं अपने सेशन में सबके सामने रखा है, बिकॉज इट्स वेरी गुड टू नो फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि वो क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं. तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है, और नहीं मिलता है कि भाई कुछ नया सोचा जाए, या वी शुड गो टुवर्ड्स क्रिएशन और क्रिएटिविटी और स्टफ लाइक दैट. नाउ यू हैव टाइम, बट यू हैव डिस्ट्रैक्शंस. क्योंकि सर आप तो बहुत स्टूडेंट से मिलते हैं और आप पढ़ाते हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट. कोई बच्चा या कोई भी बंदा किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होता है आज के ज़माने में.
सर हाउ टू अवॉइड दोज डिस्ट्रैक्शंस, एनी गुड एडवाइसेस यू कुड गिव देम कि भाई अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए और कुछ ग्रूमिंग की तरफ आइए? देखिए, ग्रूमिंग का उसूल या रूल नंबर 1 इज टू हैव अ सिस्टम, इज टू हैव अ स्केड्यूल सेट। या जब आपकी लाइफ में सिस्टम होता है ना, ये स्केड्यूल सेट होता है, टाइमिंग बदे हुए होते हैं, तो फिर आपके पास डेविएशन के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शन की आप बात करें, सबसे पहले तो आते हैं आपके गेम्स, मोबाइल गेम्स, कंसोल गेम्स। आप इस पर बैठे हैं, आज आपके 4 घंटे कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चले। अगर आपका एक सिस्टम मैच्ड है कि भाई दिस टाइम आई एम एलोकेटिंग फॉर माय एंटरटेनमेंट, फॉर माय लेजर, सो योर माइंड विल, हमारा दिमाग बड़ा ही जबरदस्त एक चीज है, कमाल चीज है। आप जी इसको जिस तरह ट्रेन करेंगे वो आपको उस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। योर माइंड विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर थिंग्स। आपको मैं बताऊं, मेरी जिस दिन क्लास होती है सुबह में, या मुझे सुबह कोई कमिटमेंट होती है, मैं अलार्म लगाता हूँ 8:30 बजे का, मैं उठता हूँ 8 बजे। क्योंकि सोने से पहले मैं अपने दिमाग को ये, मैं बिल्कुल अलार्म राइट बिफोर स्लीपिंग व्हेन आई एम बेड, आई पुट माय अलार्म एट दैट टाइम। नाउ राइट व्हेन आई डू दैट, उस जो मशीन का अलार्म है उससे ज्यादा मैं अपने ब्रेन को ट्रिगर कर देता हूँ कि भाई दिस इज द टाइम दैट इट वाज। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम आई हैव नोटिस कि मेरे उठने के बाद अलार्म बज रहा होता है। तो ये चीज किस लिए है कि यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन। फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पीपल, माई सेल्फ इवन, आई थिंक there are various things which I waste my time in even now. The best thing to do is schedule yourself. Scheduling में आपके पास कुछ चीजें हैं स्टेपल। स्टेपल वो होती हैं जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, जिसमें आपका खाना पीना, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, ये 3 चीजें आती हैं। ठीक है, इसका टाइम बांधें, खाने का भी टाइम बांधें कि अगर अगर आप बिना टाइम खाते रहेंगे तो जो अफेक्ट योर हेल्थ एडवर्सली, नंबर 1। आपके जो दूसरी चीज मैंने बोली, सॉरी, एजुकेशन थी, और तीसरी क्या थी, आई फॉरगॉट दैट। There was food, there was education, and I believe I said leisure, I think. Anyway, एजुकेशन इसलिए है कि अभी आपने सब कुछ सीखा नहीं है, या जब हमने नहीं सीखा या हमारे बड़ों ने नहीं सीखा तो आप कैसे सब कुछ सीख लेंगे। आप तो भी you're traveling in that way, so that has to be given, so allocated certain time to leisure. Limit your leisure. Leisure is important. It's very important for your physical well-being and for your mental well-being. If you don't relax your mind, if you don't give your body the perks that it requires, unfortunately you will be stunted mentally as well as physically. आपके आपके सोच में, आपके काम में, आपके फोकस में इफेक्ट आ जाएगा। Therefore, you need to set these 3 things separately. Of course, 8 घंटे की नींद के बाद, या जितने आपका एक sleeping hours, you have ample of time to do all these things, and उसके बाद भी you will find that you have an hour or 2 to spare. So, this is my advice to you, कि अपनी एक्टिविटीज को, प्रायोरिटीज को सेट करें, schedule yourself down. Only then you would be able to take control of your life. Otherwise आपकी जिंदगी uncontrollable गुजरेगी। आज आपको गेम मिल गया, आप गेम खेलेंगे, कल आपको बाहर कोई काम पड़ गया, आप काम करेंगे, परसों आपका एग्जाम हो गया, आप पूरी 2 रात जाके पढ़ते रहेंगे। जी अब वो 2 रात जाके पढ़ने में आपको कोई फायदा नहीं रहा। टेक इट फ्रॉम माई माउथ, इट डज नॉट बेनिफिट यू एट ऑल। एक देखिए, एजुकेशन को सबसे बड़ी बात, मैं पेंडेमिक को भी साइड कर सकता हूँ, हमने एजुकेशन को एग्जाम बना दिया। हमने एकेडमिक लर्निंग को या लर्निंग को हमने बना दिया है पेपर, एग्जाम, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इंटर, मैट्रिक, ग्रेड्स, ये बना दिया है। ये नहीं है ये चीज, ये नहीं है चीज। अनलेस एंड until you are able to implement something to take advantage in your life, you will not be able to learn something and make use of it. लेकिन सर अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में मैं सारी डेटा दे दूं और आप 2 दिन पढ़ के परसों उसका एक पेपर दे दें मेरे आगे, तो आपको लैपटॉप चलाना आके आपको उसकी प्रॉब्लम पता लगे, नहीं पता लगे, यू विल हैव टू डेल्व इनटू इट, यू विल हैव टू डिग इनटू इट। ठीक है, और वो चीज 2 दिन में नहीं आती, वो ग्रेजुअली आती है, वो राइट। इस्तेमाल के बाद आती है। प्लीज मेक श्योर कि माय Mohsin स्टूडेंट साहब, any लर्निंग। last message that you would like to give in a nutshell to the students? This is the conclusion of the whole conversation that we had today. I won't say a last message, I would say a couple of messages, 3 or Right, 4 sir. of them. First of all, I think the show must run on, the show must go on. ठीक है, education must continue under any circumstances. We are rising to the challenge, you should rise to the challenge as well. These are as important for you as any other. Sure, sir. दूसरा बड़ा मैसेज मेरा ये है कि देखें, फोकस
on as I said, the last सवाल आपने किया था कि focus on developing a routine for yourself. आप घर पर हैं, 24 घंटे घर पर हैं, यहाँ ये सबसे बुरा टाइम है जहाँ आपकी रूटीन खराब हो सकती है. स्कूल में तो आपको पता है कि you have to get to the school at 7:30, you will get off the school at 2 o'clock. आपका एक routine set हुआ होता है. यहाँ पे you have sort of muddled up your routine. Yeah. So you need to make sure you set up a routine. Take it up. ज़्यादातर schools के working hours and they are from 9 or 8 o'clock in the morning till 12 or 1 o'clock in the afternoon. Take it as a school routine. Be prepared for that. उस टाइम में आपने घर से बाहर नहीं जाना, उस टाइम में आपने अपने दोस्तों को नहीं बुलाना, रिश्तेदारों को नहीं बुलाना, वो आपका कमरा आपकी क्लासरूम में है. So make sure you abide by these rules responsibly. Only then we can benefit from it. And that's where I would like to conclude my entire session. Mohsin Saab, it was a pleasure talking to you. Thank you so much for being with us. And I think I would like to thank you on behalf of Indus University. It is an immense pleasure to have you. बहुत अच्छा लगा आपके साथ. आपने बहुत ऐसी तमाम बातें बताई जो कि definitely बहुत काम आने वाली हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए. And I'm sure कि तमाम स्टूडेंट्स हैं बात को सुना भी है और definitely they'll follow it. Thank you so much, sir, for being with us. Thank you, Hassan. You are a wonderful host. मैं आपको बेटा बोलने वाला था, चले बेटे ही बोल देता हूँ. You look like a student of mine as well. Hassan, पहले जब मैं यहाँ पे आने वाला था तो I was a little apprehensive कि ये 1 घंटा कैसे गुजरेगा, क्या बात होगी, क्या नहीं होगी. But here we are, sir. Almost an hour is over and the discussion is still continuing. Anyway, we can go on another 2 hours or so. But I think we have time confinement. I have my commitments. You have your commitments. Again, thank you very much. Thank you, Indus University. Thank you so much, sir. Thank you. खुश रहें. Thank you so much, sir. Be happy. Allah Hafiz.